Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Now, dear student, our current topic is some basic concept in chemistry. And so far, in case of some basic concept in chemistry, all the small terminology or basic concepts related to your examination point of view, we have covered. What is atom, what is molecule, what is elements, what is compound. Okay, now then most important part of the topic we have started, that is mole concept. Now number of moles, what is the formula for number of moles? That is given mass upon molar mass. Okay, now how to find out the molar mass? The sum of the or addition of atom or elements given in a molecules. We can find out the molar mass, we can find out the molecular mass. Then what is AMU, atomic mass unit? Okay, so AMU, it is the unit of atomic mass. Gram, it is the unit of atomic mass. But what is the difference between AMU and gram? So AMU is the atomic mass of one atom, and gram unit, it is the mass of one molar substance. Okay, that is the difference between AMU and gram. Okay, now then standard condition, 1 AMU is equal to 1 by 12 mass of 12 carbon atoms. Okay, carbon 12 atom, that is isotopes of carbon. All that points we have covered in last 3 video lecture. Now today just I'm going to repeat the mole concept, and we will discuss mole and gas, the relation between number of moles and gas. Now according to mole concept, the definition of moles we have discussed, it is the amount of substance, okay, present in 12 gram of carbon 12 isotopes. And how many atoms are present in 12 gram of carbon 12 isotopes? So that is Avogadro's number, 6.023, 6.022 into 10 to the power 23. So according to that, we can say 1 mole is equal to 1 Na particles. 1 Na particles, and 1 Na particle means Avogadro's number. So we can say 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. That particles, it may be atom, ions or molecule. Now logically simple, try to remember this relation. And what is that relation? So here try to remember 1 mole of any substance is equal to 1 Na particles, or we can say 2 moles of any substance is equal to 2 Na particle, and that Na, it may be 6.022 or 23 into 10 to the power 23. Now this relation forever you have to remember. 1 mole is equal to 1 Na particle, 2 mole is equal to 2 Na particle, 1 molecule is equal to 1 Na particle, 2 molecule is equal to 2 Na particles, and molecule, it is made up of atoms. Okay, so suppose I am saying 1 mole of hydrogen molecule. So 1 mole of hydrogen molecule is equal to, here we can write 1 mole of H2 hydrogen molecule is equal to, what is your concept? 1 Na particles. Okay, 1 Na molecules, 1 Na. 1 Na means it is 6.022 into 10 to the power 23. But if I am talking about the atom, so here H2 means how many hydrogen atoms are there? H2 means how many hydrogen atoms are there? 2 hydrogen atom. So 1 mole of H2 molecule is equal to 2 Na atoms. 1 mole of H2 molecule is equal to 2 Na atom. क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है? 2, इसलिए वो उसको अपन Na को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. बट 1 मोल ऑफ H2 molecule is equal to 1 Na particles. Okay, and how many atoms? 2 Na atoms or 2 Na particles, because when atoms are combined, it forms the molecules, and when elements are combined, it forms the compound. So mole concept, actually this is a small simple part, but logically how to apply this concept you should able, ये आपको समझ में आना चाहिए. और ये कब समझ में आएगा? व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ट्राई टू सॉल्व योर
exercise question, solved, unsolved question, and one best textbook for your entrance examination is MTG. Best text entrance examination for your NEET. Best entrance examination textbook is MTG. MTG for NEET. Try to purchase this textbook. Okay, I'm having some PDF of entrance examination textbook, that is JEE and NEET, that I will try to post in your groups. Okay, but purchase this textbook for your NEET examination, MTG. Okay, so let it be. Now our concept is mole and gas. Now after this point, ट्राई टू रिमेंबर, नोट डाउन दिस पॉइंट, ये अच्छे से लिख के रखो और माइंड में फिट करो. इसके बाद में अपन अपना स्टेट बोर्ड का सिलेबस रन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नाउ 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na पार्टिकल, 2 मोल इज इक्वल टू 2 Na पार्टिकल, 1 molecule is equal to 1 Na particle. But if molecule and atoms are given, so check how many atoms are present in a given molecule. Now after that we have discussed the formula for number of moles. अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? n. नंबर ऑफ मोल्स मींस n इज इक्वल टू गिवन मास, n is equal to given mass upon molar mass, given mass upon molar mass. Then we have studied the number of molecules, number of particles. What is the number of atoms? Rather than particles, I can write here number of atom. Now number of atom is equal to number of moles into Avogadro's number. Number of moles into Avogadro's number. Now Na is Avogadro's number. Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to power 23. 6.022 into 10 raised to power 23. Now number of molecules also is equal to number of moles into Na particle. Now number of moles, the symbol used is Na. So far in our video lecture number 3 we have discussed. उसके बाद अपन ने ये भी कवर किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास या हाउ टू फाइंड आउट द मोलार मास. मैं मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास कैसा फाइंड आउट करूंगा? सपोज ऑक्सीजन इज गिवन टू यू. नाउ ऑक्सीजन it is O2 and I am saying find out the molecular mass या molar mass of oxygen. Now oxygen it is O2 means कितने ऑक्सीजन आइटम्स है यहाँ पर? 2 and atomic mass of one oxygen is 16. So what is the molar mass या molecular mass of oxygen? Here it is 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है और कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है? 2. तो अपन क्या करेंगे? 2 into 16. ये सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों को पता है, तुम्हाला माहित आहे का हाऊ टू फाइंड आउट द, मी कसं फाइंड आउट करणार मॉलिक्युलर मास या मी कसं फाइंड आउट करणार मोलार मास. जे पदार्थ दिलेले आहेत, जे ॲटम दिलेले आहेत ते काउंट करा अँड मल्टिप्लाइड इट बाय इट्स ॲटॉमिक मास. आणि ऑक्सिजनचं ॲटॉमिक मास किती आहे? 16. ओके, आणि ऑक्सिजन किती प्रेझेंट आहे? 2. तो 16 into 2 इट बिकम 32 ग्राम. सो इट इज द मोलार मास ऑफ ऑक्सिजन, और यू कैन फाइंड आउट द मोलार या मॉलिक्युलर मास ऑफ एनी given molecules or any given atoms. Okay, so this is all about the mole concept which we have discussed in last video lecture. Okay, and I think we have solved some problem based on this concept. Now our next concept is mole and gas. Okay, so our concept is mole and gas. Now as we know, 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 and it is the Avogadro's number. Okay, now our point is mole and gas. Now we know the substance has many states, different के type या different के states रहते हैं. One is your solid, liquid and gases. So how to find out the number of moles of gases? That is our today's point. मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कैसा फाइंड आउट करूंगा, वो अपना आज का पॉइंट है. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. ना एक्चुअली टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, इंस्टेड ऑफ मास वी हैव टू कंसिडर द वॉल्यूम. मास के बजाय मैं क्या कंसिडर करूंगा? वॉल्यूम. एंड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, according to Avogadro's law, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas occupied a volume of 22.4 dm cube.
1 mole of any gas occupied a volume of 22.4 dm cube at constant या एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे मैंने लिया था 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na पार्टिकल. ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल, यहां पर मैं 1 मोल ऑफ गैस कितना लूंगा 22.4 dm क्यूब. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट द गिवन फॉर्मूला. Okay, so student, our concept is mole and gas, and according to mole concept and Avogadro's law, 1 mole of any gas occupied a volume of 22.4 dm cube. Now it is a standard condition at standard temperature and pressure. जैसे आपने फाइंड आउट किए थे 1 मोल इज इक्वल टू 1/12 into okay mass of carbon 12 atom. Okay, and that calculation become 6.022 into 10 raised to power 23, and that 6.022 into 10 raised to power 23, that we call it is a Avogadro's number, and it is Na. Okay, Na, 1 Na particle. वैसे मोल का और गैस का रिलेशन क्या आता? 1 मोल ऑफ एनी गैस occupied a volume of 22.4 dm cube, but the condition is given at STP. Condition is given at STP, मतलब at standard temperature and pressure, normal temperature and pressure, at standard temperature and pressure. So to find out the number of moles of any gas, to find out the number of moles of any gas, the formula is given. The number of moles of any gas is equal to volume of gas, is equal to volume of gas at STP upon molar volume of gas, upon molar volume of gas. So what is the formula given to find out the number of moles of gas? अब मैं वहां क्या लेता था, mass upon molar mass. Instead of mass अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, volume. So what is the formula for number of moles of gas? So number of moles of gas is equal to volume of gas at STP, standard temperature pressure, upon molar volume of gas. Now the number of moles, it is represented by the symbol N. Number of moles, it is represented by the symbol N, and the volume of gas, it is represented by V upon molar volume of gas. So 1 mole, molar का मतलब क्या है, 1 mole अपने स्टडी किए. मोलार मास क्या था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम. यहां पर मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन लीटर या डीएम क्यूब. व्हाट इज मोलार वॉल्यूम, व्हाट इज मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. और मोलार मास क्या था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस in gram, यहाँ in liter या dm cube. And what is the molar volume of any gas? That is 1 mole of any gas is equal to 22.4 dm cube, cubic decimeter, या इसको बोलते हैं लीटर. इट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम. आपको पता है, आपने फिजिक्स में स्टडी किया व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी. इसलिए ये टॉपिक में मैंने डिस्कस नहीं किया. अपने फर्स्ट टॉपिक में भी है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेकिन आपका ऑलरेडी फिजिक्स में हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है. ओके, सो डीएम क्यूब या लीटर, dm cube या liter. So what is the formula to find out the number of moles of gas? Number of moles of gas is equal to volume of gas, given volume of gas, upon molar volume of gas. And molar volume, ये क्वेश्चन आता है, what is molar volume? Volume of 1 mole of any substance in liter. What is the volume of 1 mole of substance? That is 22.4 dm cube. So this is last formula to find out the number of moles of gas. Now based on total concept, we will try to solve some examples and we will finish this topic. Now some laws are given, actually it is deleted for this pandemic year, still we will try to discuss. Okay, now our concept, that is mole. Okay, mole, all part we have finished. Mole of substance in gram and mole of substance in volumes. Okay, now student, pause your video
and note down this concept mole and gas and write the definition of also molar volume. So what is a molar volume? It is the volume of 1 mole of substance in liter or volume of 1 mole of substance in dm cube. Now pause your video and note down this all points. We will try to solve some numerical based on this point. Okay, student, now based on mole concept and gas, our first problem, calculate number of moles and molecules of NH3. Now NH3 means ammonia and it is a gas. Calculate number of moles and molecules of ammonia NH3 gas in a volume of 67.2 dm cube, cubic decimeter of it measured at STP. Now in this case, when you will see here, the gas is given to you. When you will see here, what is given to you? Gas and the dm cube. Now dm cube means it is the unit of volume. dm cube means it is the unit of volume. Now here gas is given and volume of gas is given, and what we have to find out? You have to find out number of moles and molecules. What we have to find out? Number of moles and molecules. Let's begin. Let's start your answer. Now first write what is given to you. Right here what is given to you. Now first point, volume of gas is given. Volume of gas, that is ammonia gas, it is 67.2 dm cube. Okay, now then molar volume of gas we know. What is molar volume of gas? Yes, what is molar volume of gas we know. It is 22.4 dm cube. Molar volume of gas, it is 22.4 dm cube. Now this 22.4 dm cube according to Avogadro's law, or it is a standard condition. Now what you have to find out? You have to find out the number of moles and molecules. Number of moles and molecules. Now start your point. Okay, now formula to be used right here. Formula to be used. So number of moles of gas, number of moles of NH3 gas, ammonia gas, is equal to volume of gas. Volume of gas at STP upon molar volume, that is 22.4 dm cube. Now volume of gas is given to you, that is 67.2 dm cube. Okay, upon here we can write the volume of molar volume 22.4 dm cube. Okay, now here 67.2 divided by 22.4, a simple calculation when you will see here. So you will get the answer of, or take table of 2. Now this become 11.2 and this quantity become 2 3s are 6, 2 3s are 6, remaining 1. So this become 33.6. 2 से divide करो दोनों को. Okay, now 11.2 and 33.6, if I am not wrong, directly can I say 3 moles? If I am not wrong, directly can I say the answer is 3 moles? Okay, 11 3s are 33, 2 3s are 6. Okay, so what is your answer? Your answer is 3.0, or your answer is 3 moles. A simple calculation is given. It is a basic concept. So how to find out the number of moles of gas? Number of moles of gas is equal to volume of gas upon molar volume. और ये 22.4 मैंने कहाँ से लाया? It is the molar volume of gas. 1 mole is equal to 22.4. Now second, we have to find out the molecules of number of molecules. Okay, so what is the formula to find out the number of molecules? We know number of molecule is equal to, क्या formula है? Number of molecule is equal to n into Na. Number of molecule is equal to n into Na. Now what is n? Number of molecule is equal to n into Na. Now here n is the number of moles. Just we have find out. Now Na is the Avogadro's number, so this become number of molecules is equal to 3 into 6.023 or 6.022 into 10 raised to power 23. 3 into 6.0
22 into 10 raised to power 23. Now multiplied by 3. 3 to the 6. Okay, so this become here 3 to the 6, 3 to the 6, 0, 18 into 10 raised to power 23 molecules. 18 into 10 raised to power 23 molecules. A simple calculation is there given, simple problem is given to you. Just try to remember the formula and practice it well. So what was our question? Calculate number of moles and molecules of ammonia gas in a volume of 67.2 dm cube of it measured at STP. ओके, सो वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 67.2 डीएम क्यूब. काय दिलेला होता? वॉल्यूम. मोलार वॉल्यूम मला माहित आहे. मोलार वॉल्यूम किती काय आहे? 22.4 डीएम क्यूब. सो बेस्ड ऑन दिस कन्सेप्ट, first we will try to find out the number of moles of gas, and then formula we know, number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's number. Okay, pause your video and note down each and every point. Then we will take second example. Write fast. Now, student, our next point, calculate the volume in dm cube occupied by 60 gram of ethane at STP. What is our next problem? Calculate the volume in dm cube occupied by 60 gram of ethane at STP. Now, ethane is given to you. Then mass of ethane is given to you. Actually, ethane, it is a gas. Yes, what is given to you? Ethane is given to you, and standard temperature and pressure, normal temperature and pressure, and we have to find out the volume in dm cube. We have to find out the volume in dm cube. क्या find out करना अपने को? चेक करो. Yes, क्या find out करना अपने को? Volume in dm cube. We know here. First write the given data. इसको मैं solve करा था आप लोगों को. First read 2 to 3 times. प्रॉब्लम्स को इतने कंसंट्रेशन से रीड करो कि 1 या 2 अटेम्प्ट में वो आपके माइंड में फिट बैठना चाहिए. एक्चुअली फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन योर कंसंट्रेशन एंड हैबिट इज इंपॉर्टेंट. आप कितना क्विकली वो क्वेश्चन को कैच कर रहे, कैप्चर कर रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि 1 या 2 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो प्रैक्टिस होती है, 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, लेकिन उतना अभी से हैबिट डेवलप करो ना. आपका क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम. मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन डीएम क्यूब ऑक्युपाइड बाय 60 ग्राम ऑफ इथेन. नाउ फर्स्ट राइट द गिवन डाटा. व्हाट इज गिवन टू यू? हियर मास इज गिवन. किसका मास दिया हुआ? हियर मास ऑफ इथेन इज गिवन, इट इज 60 ग्राम. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. Yes, volume of ethane. क्या find out करना है अपने को? To find out the volume of ethanes. Actually, here to find out the volume of ethane, the formula used is, ethane का volume find out करने के लिए formula used FTU. FTU का मतलब होता है formula to be used. formula अपन use करेंगे number of moles of ethane. Number of moles of ethane is equal to volume of ethane at STP. Volume of ethane at STP upon molar volume. Yes, upon molar volume. ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethane is equal to volume of ethane at STP upon molar volume of ethane gas. Now what is molar volume of ethane gas? We know. अब इथेन गैस का मोलार वॉल्यूम क्या है मुझे पता है, 22.4 डीएम क्यूब. सिर्फ मुझे यहां क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स. इफ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया तो मैं ये इजीली फाइंड आउट कर सकता. तो फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. एंड हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास. Yes, n is equal to mass upon molar mass. Now here mass is given to you. What is the given mass? It is 60 divided by molar mass. किसका molar mass? Ethane का. Now the ethane molecular formula is C2H6.
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन? C2H6। अब इसका मोलार मास फाइंड आउट करो। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। सो 12 टू ज 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 6 इंटू 1 6। सो 24 प्लस 6 इसका ये कितना आ जाएगा मोलार मास? इट इज 30 ग्राम। अब वो कैसा आएगा? आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, फाइंड आउट करो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कितने कार्बन दिए हुए? 2। किती कार्बन दिलेले आहेत आपल्याला? 2। सो 12 इंटू 2 इट बिकम 24 प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1। okay, so 24 plus 6 it become 30. So divide it by 30. So what is the number of moles of ethane? It become 2 moles. Number of moles of ethane become 2 moles. Now come here. Number of moles is equal to volume of ethane upon molar volume. Now just rearrange this here. So we can say volume. Yes, volume of ethane is equal to number of moles, that is n into molar volume. N into molar volume. Now here n is 2 into molar volume, we know 22.4 dm3. Okay, so your answer 2 4s are 8. 2 2s are 4, 2 2s are 4. What is your answer? Your answer is 22.4 into 2. Your answer is 44.48 dm cube. What is your answer? Here 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Okay, so calculate the volume in dm cube. If mass is given, first अपन क्या find out करेंगे? Number of moles of that given gas. And how to find out the number of moles? Mass upon molar mass. Mass is already given 60. Molar mass कितना आएगा? 30. कैसा 30 आया? Molecular mass या molar mass इथेन का find out करो. Now this is your second problem based on mole and concept. Okay, so dear student, this is all about your concept mole. One mole means क्या है? Amount of substance या as many entities or particle present in 12 gram of carbon 12 isotopes. That is for mass. If gas is given, 1 mole occupied कितना? 22.4 dm cube. 1 mole is equal to 1 Na particle. 1 molecule is equal to 1 Na particle. 1 atom is equal to 1 Na particle. 2 molecule is equal to 2 Na particle. 2 mole is equal to 2 Na particles. 2 atom is equal to 2 Na particles. Okay, अब ये रिलेशन आपको बनाते आना चाहिए. Note down this point. Then last one diagram we will discuss and we will try to finish this topic. Note down this point. Now student, our last point, and that point try to remember, that is 1 mole. Related to 1 mole. Now related to 1 mole, first point is gram molecular mass. 1 mole is equal to GMM. 1 mole is equal to gram molecular mass. जैसे मैं आपको पूछता हूं 1 mole water. My question, 1 mole water. Now 1 mole water is equal to how many? मेरा क्वेश्चन है 1 mole water is equal to कितना होता है? 1 mole water is equal to its molecular weight. And what is molecular weight of water? Find out करो. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 16. हाइड्रोजन का है 1. कितने हाइड्रोजन दिए हुए? 2. सो 2 प्लस 16 18. सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. अब ये 18 क्या है? 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. सो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलार मास. 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. जैसे मैंने आपको यहां बोला 1 मोल ऑफ कार्बन. माय पॉइंट, 1 मोल ऑफ कार्बन. अब 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स कितना होगा? माय पॉइंट, 1 मोल ऑफ कार्बन. अब मेरे को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कार्बन दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा? कार्बन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ले लूंगा. एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. सो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 कार्बन.
1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना आएगा 12 कार्बन, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहा तो ये कंसेप्ट माइंड में रखो, 1 मोल इज इक्वल टू उसका जितना एटॉमिक मास रहेगा वो, 1 मोल इज इक्वल टू उसका जितना मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कंसेप्ट लेने का। सो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, देन 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू Na particles या एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.023 या 22 into 10 to power 23। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम, सॉरी 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस दैट इज 22.4 dm3। 1 mole is equal to volume occupied by gas that is 22.4 dm3। अब ये बेसिक कंसेप्ट याद रखो, 1 mole is equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 mole is equal to ग्राम एटॉमिक मास, 1 mole is equal to Avogadro's number Na particle, 1 mole is equal to 22.4 dm3। and logically try to apply this concept, try to solve many as problem as you can solve, ओके और ये कंसेप्ट को अच्छे से कवर करो। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। नाउ इन नेक्स्ट वीक और फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके और उसमें मैं वो 2 लॉ कवर करूंगा रिलेटेड टू सम बेसिक कंसेप्ट इन chemistry। Note down all points which we have covered in 4 video lecture in well manner in separate notebook, okay। Assignment is compulsory, assignment you have to submit after opening of our college, okay। Thank you।